हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। आज वीडियो देखने वाले सतगुरु जी पे ये वीडियो है जिसके बारे में मुझे कब से बोला जा रहा है और फाइनली हम करने वाले हैं। ये टाइटल मेरे लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों है, आई थिंक मैंने किसी न किसी वीडियो में आपको बताया था मीट के ऊपर जो भी सारी स्टोरी है और मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊँगी। फिलहाल हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। We live in times when faith and spirituality have become very inflammable. Don't put them in the same basket. Okay, let's talk about faith first. We live in times when faith for certain has become a very inflammable, easily politicized conversation. If faith should have been personal today, it's not. Today you actually have decisions taken in the name of somebody's faith being injured. So you mentioned food right now. I read somewhere that you said there's nothing religious about the act of food. Just eat what you like. No. I Eat didn't what's say that. good for you? I said eat what's good Okay, for you. eat what's good for you. It's a very different thing. Okay, I correct myself. Eat what's good for you. But today we have a highly politicized conversation around banning beef in the name of faith. It's definitely not good for you to eat it. Beef or any meat? I'll come to that. Finish the Okay, so I'm offering that as one example of how I see a politicized conversation taking place around faith. How do you reconcile the faith of a large number of people with questions of individual liberty? I know I have read that you like books written by Salman Rushdie. We were the first country to ban him, again in the name of faith. How do we reconcile faith with individual liberty? See, it's always been said, faith moves mountains. Yes, but it freezes your mind. But the greatest crime you can do on this planet is to move a mountain. You should not move a mountain, it should be where it is. Communication में master. Just dropped from somewhere, it's grown because of various forces functioning in a particular way. Phenomenal activity has happened to build a mountain. You should never move a mountain. But people with frozen minds always want to move a mountain. Okay, having said that, deep बात है। when we say faith, it's an import for this culture. We have never had faith in this culture. You must look back little beyond 1,000 years since we've been under occupation. Here we have been told always, your life is your karma. Karma means action. Whose action? Your action. So what we are saying is, your life is entirely your making. There is no someone sitting up there and managing this for you. This is entirely yours. But for every action that you perform, whether physical, mental, emotional, energy-wise, whatever kind of action you perform, there is bound to be a consequence. If you're ready for the consequence, do whatever. If you're going to cry about the consequence, control the action right now. Based on this, now you came to food. See, the food consumption has been looked at very carefully in this country. If you just bring this back, the world will be healthy, do you understand? Here we have identified different type of people, what they should eat. If you're doing menial jobs, how you should eat. If you're doing trading, how you should eat. If you're into spiritual process, how you should eat. If you're into education, how you should eat. Why this is each person needs a different type of building of the body. Agree. You want to run 100 meters next to Mr. Bolt, what kind of food you should eat? You just want to work in Delhi, what kind of food you should eat? You want to think in a certain way, what kind of food you should eat? For all these we have very clear prescriptions. Now, when it comes to food, what it means is, we are taking another life, whatever that is, it may be plant life, animal life, whatever. You're taking another life, ingesting it, and you have to make it your life. That's a whole मैं thing. agree करती हूँ इस चीज़ से, वो energy What तुम्हें is your आती life, है। what is that life, if you look at it? All life on this planet is coming from the earth. This body is also the same soil, this is also same soil. If there is a earthworm, that is also same soil. But see how it has become, how this has become, how that has become. If I give you… you like a mango or a banana? Mango. Mango. I know, you're ruling the state right now. Really? Important? Now, ये कौन सा mango है? if you eat a mango, this mango becomes a woman in you. If I eat a mango, the same mango becomes a man in me. If a cow eats a mango, the same mango becomes a cow in the cow. Oh my Why is this God. happening? ये वाला… There is a certain information or software in you
Whatever you eat, it transforms it into a woman. If I eat, it transforms it into a man. If a cow eats, that becomes a cow. So every life is happening the way it is happening because of a certain dimension of information, or in modern terminology, let's call it software. There is a certain software, which is an arrangement of information. Now, the idea is to eat as simple a software as possible. If you eat that kind of life, which is a very simple software, your ability to override that software and make it entirely a part of you is very good. As that software gets complex, more and more complex, your ability to integrate it goes down. So especially if it's a creature which has some sense of thought and emotion, if it has emotion, then you should not eat it. Oh my God, this is the understanding. An animal which has any emotion displays certain emotions, especially if it displays emotion which is near to human emotion, you should not eat it because it will not integrate itself, that animal nature will start manifesting itself. Or in other words, in India, today maybe in cities people do not know, you see in the villages, people have very intimate relationship with the cow. They have drunk the milk of that cow, their children are drinking the milk of that cow. There is a very deep relationship. If you do not know this, cow is one creature. If something happens to you and you are in some kind of grief or misery, you don't have to be near the cow. Wherever the cow is in your house, it'll start shedding tears for you. You know, I've seen this with my eyes, I couldn't believe. Oh my God, when somebody is dead in the house, what does the cow know? It is somewhere. Oh my God. Simply tears flowing. So when it has such deep emotions, if you kill it, it's like killing a human being, it's murder or it's cannibalism. So because of that, this is not a faith thing, this is not a religious thing. We thought this is a fundamental sense. Why, when we are hungry, why can't I cut you up and eat you? What's wrong? What's wrong? But what you're saying should be about many more animals than just the cow. Yes, of course. And when it becomes about only the cow, then there is certainly a perception that it is a political decision or a religious decision. No, I'm not talking about whatever the laws. This is not about people getting up and saying it's cruel to be a meat eater. That would be a different argument. I'm not even talking about cruelty. Even cutting a plant is cruel, in my experience. But you have to do it. But if you're conscious of it, you will do it to the minimum possible extent, not do it wantonly. That's the whole thing. Now about this political ban about cow slaughter or whatever, this has many things. One thing is there is a sensitivity. Once you drink milk from the cow, she's like your mother. Killing your mother and eating her up is something people cannot digest in this country. Still 80% of the people belong to that category and they're hugely… there's a huge emotion, such an emotion which because they've always been made to be docile in a certain way, they have not violently reacted to it. But in some places, it has happened in villages and other places. There is already a beef ban in many villages just by a norm, not by any law, that you don't bring these kind of things into the village. I am not saying you must ban it or not ban it, I am saying the sensitivities of your population, without considering, you can't go do this blatantly. Because it is growing, it's becoming a growing business. India is becoming a major exporter of beef. Yes. That's not right. Even if somebody ate something, it is up to them, it's their personal taste, whatever. But now you're promoting it and you're making it grow, there is serious concern, but our people don't express it. Our people don't go out on the street and not going to kill anybody because they killed a cow. So, ban is not what is needed, more education was needed rather than banning. हे गाइस, ये वीडियो कैसी लगी आपको? मुझे बहुत पसंद आई। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सदगुरु जी की मुझे कितने वो रिस्पेक्ट है। लाइक मैं उनको पता नहीं कब से फॉलो कर रही हूँ और मुझे उनके वर्ड्स जो है उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। वो जब भी बोलते हैं मुझे बहुत पसंद है। और मैं पहले लाइक दूसरे लाइक उनकी सिंपल ज़्यादा वीडियोस देखती थी जिसमें वो वैसे लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे होते थे, वो ब्रा लाइक मीनिंग्स और ये वो। देखिए इस तरह की वीडियोज़ मैंने आप लोगों को वजह देखना शुरू किया। मैंने उनकी अच्छा चेंज है क्योंकि मैं ये भी उनकी सारी देखना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जो लास्ट में उन्होंने बोला कि बैन जो है वो नेसेसरी नहीं था, एजुकेशन मोर एजुकेशन इंपॉर्टेंट थी। और उन्होंने जिस तरह
ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, आई नो कि इंडिया में बहुत ही सेंसिटिव, स्पेशली पहले, अभी शायद आजकल नहीं, प्लीज़ मुझे बताना अगर अभी भी है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो गया था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बैलेंस किया। उनके साथ बरखा जी थी, जो आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बताया था कि वो काफ़ी प्रोवोक करती हैं अपने जो जिनको इंटरव्यू कर रही होती है, और लाइक उन्होंने बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया। मुझे पहले तो वो पसंद आया। वो काफ़ी एक दो जगह वो ऐसी चीज़ें वर्ड पता है कभी कभी एक इधर से राइट से लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट से राइट हो जाए तो कुछ और मीनिंग हो जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया। जैसे उन्होंने कहा कि फूड पे कुछ कहने वाली थी तो उन्होंने कहा नो, लाइक मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है ये कि वो खाना चाहिए तुम्हारे लिए अच्छा है। और बहुत अच्छे तरीके से इस इंटरव्यू किया। बहुत ही शांत टाइप की फीलिंग थी। बरखा जी ने ज़्यादा इंटरप्ट भी नहीं किया। मुझे बहुत पसंद आया इंटरव्यू, बहुत अमेजिंगली उन्होंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे एक तो मैं चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो मेरा मीट के साथ जो भी एक्सपीरियंस है वो मैंने शायद एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। मैं सोच रही हूँ कि जब मैं व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी अपने सेकंड चैनल पे, आई थिंक मई जून तक बनाना शुरू करूँगी, तो मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आऊँगी वीडियो में और उनको लाइक वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं मैं मीट खाती, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो उनको ज़्यादा याद होगा, उनको पता है कि मैं क्या खाती थी, वो सब आपको एक्सप्लेन करेंगे सही पंजाबी में, आपको सही समझ आएगा। तो क्या मैंने आपको शायद अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मैं बचपन में मीट नहीं खाती थी। मैं रिफ्यूज़ करती थी खाने के लिए। आई थिंक मुझे फोर्स किया गया था खाने के लिए, क्योंकि उनको लगता था और मेरे में आयरन की वाकई मिसिंग था। और मैं इसकी फ़नी स्टोरी आयरन की आपको भी बाद में सुनाती हूँ। तो क्योंकि मेरा आयरन हमेशा नीचे होता था, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा लो होता था और हमेशा मैं डाइंग होती थी। मैं काफ़ी बार मेरे साथ हुआ था कि मैं स्कूल में थी और मैं लाइक फेंटेड होने वाली थी और मुझे कॉल करते थे और मेरे डैड लेकर आते थे और वो लाइक लिटरली मुझे थ्रेट किया था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसी तरह ही करती रही तो ऑब्वियसली मैं फंक्शन नहीं करूँगी। फिर भी नहीं मैं खाया, लाइक मैंने लिटरली नहीं खाया और मुझे लाइक लिटरली फोर्स करके थोड़ा फिर फिश के साथ शुरू हुआ बच्चों की तरह। लाइक मैं करते करते मैं खा लेती थी सब कुछ। फिर भी जो मीट था वो मुझे इतना पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी जो स्मेल था वो स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे चिकन में फिर भी खा लेती थी और फिश मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। और फिर उसके बाद मैंने खाना शुरू किया, लेकिन फिर क्या हुआ 2-3 साल बाद मैंने कहा नो, लाइक मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे लाइक मैं नहीं खा सकती। मैं वेजिटेरियन हो गई, उसके बाद वीगन, उसका लंबा टाइम गुजरा और अभी शायद 1-2 साल हो गया मैं दोबारा खाना शुरू कर दिया है। यस, काफ़ी सैड है। और मैं यहाँ पे आपको आयरन की एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने टेस्ट किया था, मैं ब्लड डोनेट करती थी और अभी मुझे करना चाहिए, मैं सीरियसली जाना चाहती हूँ। तो जब से हमने शिफ्ट किया है नए घर में, लाइक इस जगह लाइक मैंने पता नहीं किया, लेकिन आई थिंक वही प्रोसीजर होता है, मुझे जाके करना पड़ेगा। थोड़ा दूर है तो मुझे जाना पड़ेगा। एनीवे ब्लड डोनेट अगर आप अपने लोकल कहीं कोई जगह है तो प्लीज़ डोनेट किया करो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है करने के लिए। एनीवे साइड एक नोट था, तो मैंने जब ब्लड डोनेट करना था तो उन्होंने मेरा आयरन लाजमी वो चेक करते, तो उन्होंने मेरा आयरन चेक किया, वो नीचे था हमेशा की तरह। और तब मैं मीट खाती थी और मीट नहीं, लाइक मीट कह सकते, आई थिंक रेड मीट इतना नहीं मैं खाती थी, बट आई मीन मीट है, लाइक उसमें आयरन होना चाहिए आई गेस। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा आयरन वैसे ही नीचे, कुछ लड़कियां होती हैं उनका आयरन वैसे ही नीचे होता है, उनको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, तो मेरा सिमुलेट नहीं करता बॉडी आयरन, तो लाइक ये कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे कहा था कि मुझे पहले आयरन अपना ऊपर करना पड़ेगा और फिर मैं ब्लड डोनेट कर सकती हूँ। मैंने कहा था ओ माय गॉड, लाइक ये क्या बदतमीज़ी है। तो मैंने उनको बताया कि वर्दा कि देखो कि मैं खाती मीट। उसने फिर मुझे कहा कि फिर ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्या कह सकती है। तो उसके बाद मुझे लगा कि इसका मतलब है गोश्त खाने का कोई फ़ायदा नहीं है आयरन के लिए। तो मैंने लाइक इस चीज़ को, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सैड हो गई थी, मैंने कहा था लाइक ये क्या है। उसके बाद फिर मैं वेजिटेरियन बाय द वे हुई थी और मैं काफ़ी टाइम तक रही थी। और दोबारा से लाइक आई नो कि लाइक मैं जो वो चीज़ें बोल रहे थे कि वो एक एनिमल की एनर्जी तुम अपने पर डालती, इस पर मैं 110% बिलीव करती हूँ गाइज। और ये मजाक नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि मैं वेजिटेरियन थी, इसलिए क्योंकि ये सच है। लाइक लॉजिकली ये सच है। अगर तुम गौर करो इसको, इसके अंदर फैक्ट है। और जब भी मैं वेजिटेरियन थी मैं लाइक इस तरह की चीज़ें बोलती थी लोगों को कन्विंस करने के लिए और बताने के लिए कि क्यों मैं नहीं खाती और ये वो, और मैं इस पे बिलीव करती थी। और सिर्फ रेड मीट नहीं, मुझे लगता है जनरली जो लाइक फ़िश भी होती है, उसकी भी जो पता है कुछ फ़िश होती है उनकी एनर्जी लाइक तुम्हारे अंदर आती है, हो ही नहीं सकता।
कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो गोश्त खाते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव भी होते हैं, ये मैंने सुना था और मुझे इस पे पूरा बिलीव है कि वो थोड़े से गर्म दिमाग के हो जाते हैं। और कुछ लोगों को ये अच्छी चीज़ लगती है, उनको लगता है वो अलग स्ट्रांग हो गए, बट मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कुछ जानवर होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर में होते हैं। आपको समझ आ गई है, तो मैं इस पर बहुत बिलीव करती थी। ऊपर से जो हेल्थ के लिए मीट इतना भी अच्छा नहीं है, और मे बी मॉडरेशन में अगर आप खाओ तो आपको कैंसर में भी नहीं होगा, बट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म। और मैंने इतनी रिसर्च की इस पर, लाइक जब मैंने ट्रांजिशन करी थी वेजिटेरियनिज्म में, तो मैंने इतनी सर्च की थी, और मैं ये 110% इस पे बिलीव करती हूँ कि वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तुम खाना चाहते हो फाइन, बट तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी हेल्थ के लिए। तुम कितने भी फैक्ट्स दे सकते हो, कितने भी लॉजिक्स दे सकते हो, कितने भी चीज़ें बता सकते हो, लेकिन मैंने इतनी रिसर्च की है, सीरियसली मैं इस पर कन्विंस्ड हूँ कि जब मैंने वो डिसीजन लिया था मुझे पता था कि ये इसलिए क्योंकि तुम्हारी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म सही नहीं है, और टाइम टू टाइम उसमें ब्रेक तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि एक लंबा ब्रेक बीच में लेना चाहिए अगर तुम खा भी रहे हो। और मैंने तब पढ़ा था कि अगर तुम जो गोश्त खा रहे हो वो तुम खाना बंद भी कर दो तो 6 महीने, आई थिंक 6 महीने तक तुम्हारी बॉडी में वो फिरता रहता है। लाइक इतनी देर तक तुम्हारी बॉडी में रहता है। ऐसा नहीं होता कि तुमने खा लिया अगले दिन तुम्हें लगता है वो डाइजेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी बॉडी में रहता है वो। आपको समझ आ गई है? आई डोंट नो मैं क्या कह सकती हूँ इस पे। मैं जब मैं इस तरह की वीडियोस देखती हूँ मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ कि ओ माय गॉड, लाइक आई विश कि मैं दोबारा से उस ट्रांजिशन कर सकूँ, बट ऑनेस्टली मेरे ख्याल में मुझे कभी भी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए मैं वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मेरे लिए सही नहीं है। फिर ऐसा लगता है सारे तुम पे चढ़ गए हैं, लाइक सीरियसली हर कोई तुम्हें कन्विंस, आपको आइडिया भी नहीं मैंने कितनी चीज़ें सुनी है, लाइक ऐसे लगता था मेरी लाइफ उस पर बेस्ड है, हर कोई को लगता था बस उसी पे बात होती थी, और मैं लाइक वो टू मच हो गया था मेरे लिए। और अगेन मैं उस पर ब्लेम नहीं देना चाहती लोगों को, मैं ब्लेम नहीं दे रही, मेरा अपना डिसीजन था बनना भी वेजिटेरियन और ना बनना भी, लेकिन वो बहुत ही इतना टायरिंग हो जाता है गाइस। लाइक तुम्हें लगता है तुम्हारी सारी एनर्जी उसमें कन्विंस करने में गुजर रही है, और है पता नहीं सबसे बेस्ट तरीका ये है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और ब्रेक लेते रहो लंबे बीच में, या फास्टिंग भी अच्छी चीज़ है। पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, या वैसे ही आप जनरली हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हो तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एनीवे ये वीडियो देख के मुझे बहुत पसंद आई है, और मैं थोड़ी सैड हो गई हूँ क्योंकि मैं अब नहीं हूँ वेजिटेरियन। देखिए ये जो भी बात कह रहे थे मैं 110% इसे लाइक बैक करती हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। स्पेशली अगर स्पिरिचुअली हमने बात करनी है तो वो एनर्जी वाली बात मैं इस पर 110% बिलीव करती हूँ, और कोई मुझे आके ये नहीं कह सकता कि मीट अच्छा है या उसकी कोई रीज़न है अदर देन उनकी अपनी रीज़न। लाइक कोई रीज़न नहीं है। लाइक इतने 1000 साल पहले हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं थे, हमारे पास अक्ल नहीं थी, हमने इतना इवॉल्व नहीं किया था। अभी मुझे लगता है कोई रीज़न नहीं है अदर देन सिर्फ हमारा जो सुपरफिशियल हमारे सेल्फिश रीजंस हैं। एनीवेज ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बोलती रहूँगी। आप लोग बताओ आप इस बारे में क्या सोचते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय।